करते रहो, एडमिट करते रहो और यूट्यूब चेक कर लो बस। होने वाला 45। सेकंड का उसने क्या था अपना नाम बोल रहा बैग के पास में जो रखते हैं। हाँ 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 इसको वही रखते हैं।
क्या रखा है? जुड़े हैं क्या? ओके सर। ज्वाइन कर लिया तो यही स्टार्ट करेंगे ना, पहले स्टार्ट करेंगे। सर इनको बोलो न्यू लिंक न्यू लिंक क्या न्यू लिंक? दूसरा को पहले भी वापस लेट से दोबारा भेजा हुआ था जो आपने वापस दोबारा भेजा। हाँ वो वाला भेजा है, तो बोलो उनको ज्वाइन करने को। व्हाट्सएप पे ही वो लिंक भेज देते हैं, उनका व्हाट्सएप इन लोगों के पास है ना, इनके पास तो है नहीं। अभी किससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं? अभी यूट्यूब पे चालू थोड़ी कर दिया। वो वेटिंग चल रही है। एमएम ETC के नाम से प्रॉब्लम ज़्यादा है दिख रहा है। हाँ जुड़ेगा। भाई क्या कर रहे हो आप? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के सेकेंड डे सेकेंड सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे रिसोर्स पर्सन जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर। मैं सर का एक छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूँगी। सर प्रेजेंटली अ कंसल्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट द मालवे मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर. As a teacher, he has taught at the primary, secondary, undergraduate and postgraduate level. Dr. Bhatt has guided research students and has undertaken several research studies having policy implications in the areas of teacher competencies and their development, quality of their teachers' education, the effect of schooling, program evaluation and psychology of education. He has contributed to various books, journals and reports of committees on education such as the NCF 2005 and the National Curriculum Framework for Teacher Education. He has made academic visits to USA, UK, Canada, China, Malaysia, Thailand and Brunei. And welcome sir, thank you so much. आपका स्वागत है सर आज के सेशन में। आपने मेरा तो परिचय करा दिया है। क्या आप पार्टिसिपेंट्स के परिचय करवाएंगे? कैन यू इंट्रोड्यूस द पार्टिसिपेंट्स? जी जी जरूर सर। टोटल हमारे साथ रिसेंट वर्किंग फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं और एमएड स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। ये सभी एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं या अदर डिसिप्लिन के भी हैं? सर मोस्टली जो है वो एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं सर। Okay. Thank you so much. Thank you. Shall I see them if they can open their videos? If I can see them. पार्टिसिपेंट्स जी हाँ, अपने वीडियो ऑन कीजिए पार्टिसिपेंट्स। I can see Divya madam, Suman madam, Deepak sir, Varsha madam, Divya madam, Anu madam. Yeah, I can see. So nice. Kumar Singh sir, thank you for opening your video. Ragini Tripathi madam, thank you. Yeah. Preeti Sahu, thank you. Yeah. Okay. Madam said that you are faculty members, you are also research scholars and MA students as well. You know that basically since I am from Mysore, I might not be able to speak so fluently in Hindi. Please tolerate me on that. जहाँ भी हो सकेगा मैं हिंदी में बात करूँगा. Otherwise, my natural choice would be English. Thank you. आप लोग एक मिक्स ग्रुप हैं,
मेरे ख्याल से क्योंकि एमएड स्टूडेंट भी हैं और रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं. तो let me see if I can try to pitch my presentation to this wide audience. सबसे पहले I would like to know. I'm sure that all the faculty members are PhD holders. You have done your research. Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yeah. So then in fact you would be sharing this presentation along with me because you are also equally informed about research as I am. Let me see. The topic which was suggested to me was NEP on research. That was the topic. But subsequently, I had requested that let me go into a very critical aspect of the research study, especially quantitative research study. That is the logic of hypothesis testing. That would be the theme. ये जो लॉजिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. Hypothesis, what do you say in Hindi? What do you say in Hindi for hypothesis? परिकल्पनाएं. परिकल्पनाएं. हाँ, परिकल्पनाओं को कैसे हम टेस्ट करते हैं, इसका लॉजिक क्या है. तो इस विषय पर I would be trying to speak to you. But to begin with, let me also ask you this question. With the presentation, I'm sure that you are familiar since it is second day. तो दूसरा दिन है. आप लोगों को पहले दिन काफ़ी दो प्रेजेंटेशंस हुए हैं और आज भी मुझसे पहले भी एक प्रेजेंटेशन हुआ है. तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ NEP के बारे में आपको बताया गया होगा. तो let me try to bring to you the main implications of NEP and then go into what I want to present. Shall I make a presentation? Is it okay? Yeah. Are you able to see the presentation? आप देख रहे हैं क्या presentation? Is it visible? No? It is not visible? Not now, sir. Not yet. Okay. But here it is showing sharing. Fine. Let me go back and then share again. That's a visible. It was visible. Oh, there is a time lag between. Okay. Fine. Let me go to share. Yeah. I think now. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Now we are able to see. Okay. The point which I was trying to make was that there are a few implications of NEP vis-a-vis the what is that research is concerned. However, I think this is not moving. Let me go back once again because it's not moving now. Let me come back to the. There is something terribly gone wrong. Okay, just give me a little time. No, there is some problem with my mouse itself.
Okay, what I will do is I will log on from the other system because there is some problem with this system. Please excuse me for that. There are some technical glitches. Participants, आप जुड़े रहिएगा. हाँ चल रहा है। हाँ तो मत जाएगा।
पार्टिसिपेंट्स, अभी कुछ ही देर में सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस एफडीपी 5 दिन के जो एफडीपी सेशन के है सर्टिफिकेट, आपको 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, डेली सेशन के आपको अटेंडेंस मस्ट है। लास्ट में आपको एफडीपी सेशन जो लास्ट डे आपको एक क्विज सेशन रखा गया है, एक ऑनलाइन असेसमेंट रखा गया है और एक असाइनमेंट जिसका आपको टाइम बता दिया जाएगा। असाइनमेंट आपको किसी भी टॉपिक पे जो आपको 5 दिन आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक के ऊपर पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करनी होगी। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी, उस टाइम ड्यूरेशन में ही आपको आपकी पीडीएफ जो होगी रिलेटेड टू टॉपिक आपको जमा कराना होगा। सॉरी दीप्ति मैम, या बोलिए अनिता जी मैम। मैम मैंने रिपीट अगेन। ओके मैम। सर जुड़ गया मैम। ओके ओके अनिता मैम, मैं आपको बताते हैं सर जुड़ गए हैं। एक बार हम सेशन कंप्लीट कर लें। जी सर। मैम आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सर हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं।
आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं वो सर ज्वाइन भी तो सर अभी वीडियो आउट हो गए तो दोबारा वो माइक, उनका माइक से प्रॉब्लम हुई है, अपने यहाँ से नहीं है। अपने यहाँ से कुछ भी नहीं। दीप्ति मैम को बोलो तब तक मैं कुछ बोलते रहे, टेक्निकल इशू आ गया। ज्वाइन कर लिया तब तक दीप्ति मैम बोलो थोड़ा टेक्निकल। पार्टिसिपेंट्स कुछ ही देर में सब हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। ये वापस हो गया इधर, लेकिन जी यूट्यूब अनिता मैम आप पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एफडीपी के सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। पहले आपकी हर सेशन की अटेंडेंस आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद एक असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। असाइनमेंट आप जो भी टॉपिक 5 दिन एफडीपी में जो टॉपिक चल रहे हैं उन टॉपिक में से जो भी आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक के ऊपर एक असाइनमेंट का पीडीएफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर आपको सबमिट करना होगा। और लास्ट Madam, में जी am I audible now? yes sir, we are waiting for you. Yes, thank you. I'm extremely sorry. I'm really extremely sorry to all participants because this has never happened to me. This is the first time I am facing this technical glitch. Anyway, I'll now come back to my presentation, please. Yeah, just a minute. Let me open the. Oh, this mouse is some problem again. Is it? Just a minute. There's some issue with this thing.
Just a minute. Be back. Just let me change this and then. Okay. Yeah. Is it okay? Are you able to see now? Yes, sir. Yeah. Sorry. In fact, Yes, there sir. was a problem with this itself. My mouse, I think, had a problem. That it was not working. You can see that. Um, anyway, though I can move it. Is it possible? No, no. चल गई ना मैम Again, this is a problem. If I can, uh, it's, I think okay. Let me not bother you with the this thing. If you remember, the NEP has given a few recommendations. One of them is research as a core requisite. It has emphasized that
the faculty members of universities and colleges टीचिंग के साथ साथ उनको ये रिसर्च भी इक्वली इम्पोर्टेंट माना गया है और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन they have established and research intensive universities is another universities को उन्होंने तीन तरह की यूनिवर्सिटी they have suggested. One which is teaching intensive university, another is research intensive university, and research and teaching intensive university. और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को महत्व दिया गया है, R&D सेल्स खोले गए हैं और रिसर्च जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में लाया गया है. आपको आपको पता ही होगा कि if a student takes research dissertation in a 4-year program, if the student is completing, then that student can directly go for PhD. Even an undergraduate student can go for PhD. So there are a few things which they have suggested in the NAP. Let me now come back to this, what I wanted to discuss with you, and that is about hypothesis, logic of hypothesis testing. Can you please tell me which type of research studies do we require hypothesis? किस तरह के स्टडीज में हमें हाइपोथेसिस चाहिए? Yes, any of you can start. Athul, you want to speak? Athul, you want to speak? No, sir, sorry, I'll just mute again. Okay. कौन सी टाइप के स्टडीज में हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं? Quantitative research. Sunil Kumar is saying. Sunil Kumar sir, can you come on the screen, please? Can I see you? Sunil Kumar sir. Broadly, you know that you have tomorrow 2 sessions, one on quantitative and another on qualitative research. Your program schedule is saying that quantitative research may be, there are different types of research. You know that एक तो experimental research होता है और एक descriptive research होता है और एक correlational research होता है. किस तरह के research में हम hypothesis formulate करते हैं? Is it all quantitative research can have hypothesis? Quantitative, experimental. Kanwar Singh ji sahi hai. In fact, you know, any experimental research will have research hypothesis. You know that. But correlational research, जहाँ पे हम relation देखना चाहते हैं, two variables के आपस में जो संबंध होते हैं, उसको study करना चाहते हैं, तो भी हम hypothesis formulate करते हैं. और even in descriptive survey, we are formulating research hypothesis. ठीक है? So that is one part. Mostly quantitative researchers have hypothesis. क्या qualitative research में hypothesis नहीं होते हैं? Is it true? Is it true that there is no hypothesis at all in quantitative research? No, sir. Yeah. Preeti Sahu madam is saying no. Yeah. Suman Sharma is saying not true. Kanwar Singh is saying no, sir. Yeah, true. Definitely you are right in those things. But you know what happens is in some of the qualitative researches, we go with an intention to explore. We are not going with any predetermined idea. We are not going to study anything with a predetermined idea. So in that situation, we are not having any hypothesis in mind. Actually, the theory gets evolved, like in phenomenological studies or in grounded theory research or in narrative research. We do not have a hypothesis in mind. What happens is the hypothesis gets evolved. Actually, the theory itself gets evolved. So then what is a hypothesis? What is a hypothesis? Anita madam, you have raised your hand. Yes, sir. Yeah, please. You can Qualitative research में भी hypothesis बनती है. Yes, but actually the Qualitative hypothesis. research में भी
जी सर। हाँ बताइए बताइए। सर क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हाइपोथेसिस बनती है मे बी? It is not for verification. Hypothesis का मतलब वहाँ पे it is not for verification. What happens is in say for example in grounded theory. Grounded theory में when you explore the nature of hypothesis and the theory itself gets changed. It gets evolved. When it gets evolved, there is no single hypothesis. That is the reason why we say that quantitative research. See, there is also another very interesting thing that when you want to establish a hypothesis, you are actually trying to say that something is definitely true or not true. In that sense, the hypothesis is present in quantitative research more than qualitative research. Let me ask you a very simple question now. You know, when do you uh, formulate a hypothesis? At what stage of research do you formulate a hypothesis? जी सर। Anita, madam, you wanted to speak? No. When do we formulate a hypothesis? Yeah. When we develop our research proposal. RM means what? Sapna madam is saying that when we want to study relationship. Yeah. Okay. Preeti madam is saying in research method. No. आप जो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के किस स्टेज पर, at what stage do you formulate a hypothesis? Does a research begin with hypothesis? रिलेशनशिप शो करनी होती है सर। कंवर सिंह सर, आप बताइए। सर जब अपन को रिलेशनशिप शो करनी यस, रिलेशनशिप शो करनी होगी जब अपन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे, या कोरिलेट करना होगा जब अपन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। लेकिन वो रिसर्च के कौन से स्टेज पर आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं? जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब करते हैं? It's a first stage, I guess. यस हेलो यस प्लीज। हेलो मैम सर। दिव्या मैडम कैन स्पीक। दिव्या मैडम। सर जब हमारा ऑब्जेक्ट रिसर्च के लिए जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, उसके बाद हम अपना प्रपोज्ड आंसर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तब हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। Okay, okay. Let me give you an instance. See, for example, if you want to study the relationship between two variables, कंवर सिंह साहब बोल रहे थे relationship between two variables. ठीक है? जब hypothesis test होता है, it is not necessary that it has to be a relationship or association between two variables. It can be different types of situations where hypotheses get formulated. So then we have to also see what types of hypotheses are there. See, there are various types of hypotheses. One of them you can call that as descriptive hypothesis. Descriptive hypothesis. What is a descriptive hypothesis? What do you mean by a descriptive hypothesis? I'll give you an example. Suppose you say that the rate of unemployment among arts graduates is more than the science graduates. The rate of unemployment among arts graduates is more than science graduates. You are actually describing. Whereas the moment you want to quantify it and say that in relational terms, what Kamarjit Singh said, how would we say? For example, families with higher income spend more on entertainment. Variables क्या है यहाँ पे? What are the variables here? Can you tell me what are the variables? Families with high income
spend more on entertainment? सर सर इनकम भी एक बताइए। वेरिएबल है और एंटरटेनमेंट रेट जो है वो भी एक वेरिएबल है जो कि इनकम से अफेक्ट होती है. एंटरटेनमेंट विल अफेक्ट विद द इनकम. एक्चुअली एंटरटेनमेंट पे नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट. सॉरी इट इज सर. नॉट ऑन एंटरटेनमेंट. तो सर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर. जो है वो हमारी सैलरी से डिसाइड होगा कि अगर यस, सैलरी ज्यादा है तो. वही तो. सी द थिंग इज व्हाट एम आई सेइंग, जिनके सर आमदनी ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर जो भी फैमिलीज कम. जिनकी आमदनी ज्यादा है, वो एंटरटेनमेंट पर ज्यादा खर्च करते हैं. यस सर. These are two variables. What are you? What Kamalji said, Kamar Singh said is this type of research that you are finding out, is there a relationship between income, level of income, and nature of expenditure. Nature of expenditure. तो इस स्टडी को आप कैसे करेंगे? How will you go about with this study? There are two variables here. दो वेरिएबल हैं. वैसे तो आप लोग प्रोग्राम करवाओगे उधर खाने पीने कैसे डिजाइन करेंगे? How will you go about testing this hypothesis? As a researcher, what will you do? Somebody can explain this. Maybe I'll come back to Kanwar Singh sir. कल 2 सेशन है. Kanwar Singh sir, आप बताएंगे? दो सेशन होगा. क्या नाम है? Kanwar Singh sir, विष्णु सर से बात हुई कि नहीं? तो कैसे हम क्या आप बता सकते हैं? हाँ बताइए. वो तो यही मार्केट में फैलाए हुए थे कि मेरे सर एक इनकम का और सर एक एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप निकालेंगे अपन. ठीक है, रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे आप? What is the procedure of finding out that relationship? How will you find out the relationship between these two variables? Anyone of you can tell. सोचिए, अगर ये आपकी स्टडी है, आपने ये स्टडी लिया है कि आप देखना चाहते हैं कि जो जिनकी आमदनी, जो फैमिलीज की आमदनी ज्यादा है, लेवल ज्यादा है, क्या वो एंटरटेनमेंट पर ज्यादा खर्च करते हैं, या क्या ये दो वेरिएबल्स पे रिलेशनशिप है? बीना मैडम. Any of you can speak. सर How will you? Yes, सुमन. सर बिल्कुल, अगर हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. तो ये ऐसे हम एक रिलेशन कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे मेरी जॉब छूट जाती है और मुझे कम पेमेंट मिलने लगता है, तो फिर मैं अपने एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर को शायद कट करना पसंद करूंगी. तो इस तरह से अगर हम रिलेशन मेंटेन करें तो शायद. थैंक यू मैडम. ये सिचुएशन ऐसा है कि अगर आमदनी बढ़ती है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पे तो ज्यादा खर्च नहीं होगा ना, सभी खर्चे ज्यादा होंगे. सी, व्हेन योर इनकम इज मोर, योर एक्सपेंडिचर ऑल्सो विल इंक्रीज. सो एंटरटेनमेंट पे ही नहीं है, इवन अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल योर हाउस रिलेटेड डेकोरेशंस और योर क्लॉथ, परचेज ऑफ क्लॉथ, ये सब एंटरटेनमेंट पे नहीं आएगा. तो हाउ विल यू फाइंड आउट क्या इनकम ज्यादा होने का जो रिलेशनशिप है एंटरटेनमेंट ज्यादा होने के ऊपर, एक्सपेंडिचर का ज्यादा होने पर निर्भर है? हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? सर बोलो. टूल्स के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करेंगे सर, इसके लिए स्टडी करेंगे सर. स्टडी आपको करेंगे. डेटा मिल गया, आप सोचिए कि आपको डेटा मिल गया. यस, So may I Suman. try on this? Yes, please, welcome. Yeah. Yes, regarding this salaried and entertainment matter, here we can look into an expenditure statement where its expenses is described
or itemized Madam, clearly? yeah, you have Not got just the in data. total. You have got the Yeah. data. Let us say you have got the data. Hmm. What will you do after that? How will you prove? We will itemize the Yeah. things clearly. Okay. सर How will you मैं ट्राई prove करूं? that? Yes, madam. सर सबसे पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, Mm-hmm. देन हम अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, फिर जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग टी टेस्ट एंड ओवर वट भी जो उसमें यूज होगा. इसमें इसमें क्या यूज होगा मैडम? ये जो मैंने बताया ना, यस सर. रिलेशनल स्टडीज में यस सर. सर कौन सा? डिस्क्रिप्टिव सर्वे. कोरिलेशनल कोएफिशिएंट. ठीक है. हाँ जी. वेरी गुड. इनफैक्ट इवन इन सर कोरिलेशन दोनों में कोएफिशिएंट. संबंध बता रहे हैं इसलिए कोरिलेशन ही होगा. Very good, very good. Divya madam, you are right. See, that is another type of situation. What I told you, two types of hypothesis now. One is descriptive hypothesis, where you are just describing. Sorry. You are not actually, yeah. Whereas the second one You are is saying related. about directional or non-directional hypothesis, is it, sir? No. I have not come to Then, that yet. I then, am sir? only saying types of hypothesis as descriptive, relational, and the third one which I am telling now is causal relationship. What is causal relationship? Cause and Sir, effect, cause you and know. effect. Hello, sir. Sir, may I, sir? Yeah, please. सर ये कॉज एंड इफेक्ट की अगर बात करते हैं, कॉजल हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि जिसमें हम किसी चीज के बढ़ने का प्रभाव या किसी चीज के होने का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, कारण और प्रभाव हम देख रहे हैं, वो कॉजल इफेक्ट कहलाएगा सर, जिसमें हम Okay. दो वेरिएबल के बीच में ये देखना चाह रहे हैं. आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ. जी जी. As income increases, expenditure on entertainment also increases. Is this causal? हाँ जी सर. सर ये Is it causal? कॉजल हाइपोथेसिस होगी सर कि कैसे एक होगी? सर आपका जो इनकी जो इनकम है उसके बढ़ने से उसके कारण हमारा ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, तो उसका कारण ये है ना एक्सपेंडिचर बढ़ने का कि हमारी इनकम बढ़ी है इसलिए हमारे खर्चे बढ़े हैं. ओके. अब मैं आपको और एक सिचुएशन देता हूँ. Let us say that the teacher's qualification, higher the qualification of the teacher, higher the achievement level of students. जी सर. Is it causal? Higher the qualification. Is it causal? नो सर, ये समटाइम्स इट विल नॉट, कहीं हो सकता है कहीं नहीं. There is no sometime in the set. It has नहीं to आप be बिल्कुल always. सही है सर, लेकिन सर यहाँ पर हम ये बात जी जी सर कि हायर द एजुकेशन. Let us listen to Preeti Sahu madam. She is saying no. Preeti Sahu madam, can you speak? Preeti Sahu madam, can you speak? Good afternoon, sir. Sir, according to me, this is not a cause and effect relationship. This is a correlational relationship. Yes, definitely. Why it is not causal? Actually, the two variables are correlated with each other. One is not affecting the other variable. No. Let me ask you this question. When will you say that? Suppose it is affecting. Yes, sir. What is that condition which will be required for you to say that the higher qualification is affecting student achievement? Why you are not able to establish the causality here? Because they are not directly causing an effect. It is creating a relation, but it is not according to this. It is not that
the qualification of teacher is not directly uh, related to the achievements of the students. Okay, I think Dr. Deepak Verma has something to say. Deepak Verma, sir. Deepak Verma, sir. हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर इन दोनों में कोरिलेशन रहेगा क्योंकि एक्चुअल में सर टीचर की क्वालिफिकेशन और स्टूडेंट के अचीवमेंट पे दोनों पे इफेक्ट इन दोनों वेरिएबल से आएगा सर। आपको मैं okay, let us presume like this. See, some of the students whose achievement has increased, they are also going for tuition. वो बाहर से ट्यूशन ले रहे हैं. If suppose if you not only the qualification of the teacher, but also the students are taking tuition from outside, how will you establish? Yes, sir. There is some this. Okay. Let me now come to the question. See, the establishment of relationship between two variables does not require an experiment. Whereas establishment of cause-effect relationship requires either an experiment or a quasi-experiment. An experiment or a quasi-experiment. But it has to be established. Causality has to be established. That is what I was trying to tell. So the methodology will be, the logic of hypothesis testing will vary according to the nature of hypothesis that you are formulating. That is what I wanted to tell. Somebody asked me about this null hypothesis and statistical hypothesis. Who was that? Directional पूछ रहे थे ना कोई? Chandan sir? Yes, sir. Yeah, who? Divya madam, you were asking that. Yes, sir. Okay. Now let me. Okay, I think somebody. Okay. Yeah, better. Let me come to this situation. In research, suppose I'm formulating a research that a treatment X is causing a result Y, an effect Y. The treatment X may be my method of teaching. I have a new method of teaching, and I am claiming that this new method of teaching will result in improving the achievement level. You will find any number of studies. See, there are methods for problem solving development, there are methods for critical thinking development, there are methods for creativity development, there are methods for scientific attitude development. There are so many methods, and a researcher is saying this particular method, if I'm using, then this effect will be seen. This is the research hypothesis. But when you want to test the hypothesis, you will be testing a null hypothesis, that there is no difference, or this does not make any difference. So that is where a null hypothesis is a statistical requirement. It is a statistical requirement. Let me bring to you a situation where we are formulating a hypothesis in a legal situation. आपको पता है कि suppose when you go to the court, I'm sure that you would not have gone to the court. I don't want you to go to court also. Suppose you have gone to the court, the judge will say, unless you prove this person guilty, he is innocent. A person who is innocent till he or she is proved guilty.
What am I saying here? The onus of proving guilty, is on the researcher. The onus of proving this hypothesis is true is on the researcher. The researcher has to prove. But then the question is this: suppose in one study, I am doing that study, I am doing this particular study, and I got a positive result. I found that the achievement levels of students have gone higher. Can I say that the null hypothesis is rejected? Can I say Yes, sir. that Yes, the sir. null hypothesis is rejected? Again, I come back to the legal situation. The court will not announce that this person is innocent. Court language will not be that. What does the court say? Court says this person is not guilty. It doesn't say he is innocent. There is a difference. For the court to say that because the evidences were not there, he is not guilty. Somebody went to the court saying that he is guilty, and the person was asked, give me evidence. What are your evidence? And the person gave evidence, and the evidence was not actually appropriate for proving this person guilty. So what does the court say? Not guilty. It doesn't say this person is innocent. What does it mean? Tomorrow, if some new evidence is available, tomorrow, if some new evidence is available, then the court, that person can be proved guilty. That person, somebody who was said not guilty, can be proved guilty. In research also the same thing happens. And in education research, we have some research studies which say that this influences that. There are some other research studies on the same two variables. It says there is variable X does not influence variable Y. Why such a thing happens? Why do we get contradictory results in educational research? ये तो साइंस में नहीं होता है. साइंस में अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, इट इज 100 डिग्री एवरीवेयर. सब जगह में एक ही है. Because it is a qualitative research and it is very difficult to quantify a qualitative research. And in quantitative research, we are using facts and figures, which is, as you are saying in science research, we are using facts and figures which are easy to judge and analyze. So that is the basic. Any other answer? एजुकेशन में ये क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट क्यों आते हैं? आप रिव्यू किए होंगे ना. When you review the research studies conducted earlier, there are several studies which have said the variable X influences variable Y, and there are also studies which say variable X does not influence variable Y. ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आता है एजुकेशन में? In other words, when will you stop doing research on those two variables? When you will stop? अब तो ठीक है, ये प्रूव हो गया कि वेरिएबल एक्स या तो इन्फ्लुएंस करता है या इन्फ्लुएंस नहीं करता है. इसके बाद में हम रिसर्च नहीं करेंगे. ये दो वेरिएबल पर रिसर्च नहीं होगा. डज इट हैपन इन एजुकेशन? क्या ऐसे होता है? ह्यूमन बिहेवियर. सुमन शर्मा इज सेइंग ह्यूमन बिहेवियर. कैन यू एलाबोरेट दैट a little more, madam? Can you elaborate that a little more? सर एजुकेशन फील्ड में एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड अलग अलग हो सकते हैं, एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है, ह्यूमन अलग अलग बिहेव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो है वेरी करती रहती हैं.
ठीक है ठीक है। एक एक चीज ये है कि सी बिकॉज वी आर यूजिंग द लॉजिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं हम। आपने देखा होगा जब इलेक्शन हो जाता है तो वो क्या रिजल्ट आई मीन प्रेडिक्ट करते हैं ना रिजल्ट, तो क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल आता है, एक एक एग्जिट पोल बोलता है कि पार्टी ए विल विन, और एक एग्जिट पोल बोलता है कि पार्टी बी विल विन, और ये बोलते हैं इतना सीट आएगा। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट दैट the exit poll cannot be true? Is same logic is true for educational research also, because we are using statistics, because we are taking sample. We are not studying the entire population. If you study the entire population, then we do, I mean we can say for sure it is true. But since we are only taking a sample, that sampling distribution causes the variations in findings also. Because mean of the sample selected need not be same when you draw two samples. But the question is, when you are using statistics also, did you use the parametric statistics or the non-parametric statistics? When do we use parametric statistics? When do we use parametric statistics? What time do I have to stop? Even though I lost a little time, how much more can I take? Can I go up to 5 o'clock? Is it okay? Madam, is it okay if I go up to 5 o'clock? Am I audible? Is it Preeti madam is saying yes, of course, but madam, let the organizers say. Okay, see, parametric statistics, when do we use? When do we use? Yeah, Suman is saying the sample is representative of the population. Yeah, sample is, it need not be representative, because it depends upon which method of sampling have you followed. There are parametric sampling methods and non-parametric sampling methods. The parametric sampling method is random sampling, whereas the non-parametric sampling methods, there are so many, they are not random. Why is it then that random events are considered to be normally distributed? Why? Random, वो random जो word है ना, हमने हमारा sample जो है randomly select किया है, मतलब there is no bias involved. There is no bias. Because there is less bias. Yes, correct, Preeti madam. But the logic is also, we can prove that. Why? How is it that we get a distribution of that kind? A normal distribution. How do we get that? Let me give you one simple example. Suppose I am having a coin, a single coin. When I toss the single coin, what is the probability of outcome? 50% head, 50% tail. That is the probability. Suppose I am tossing two coins, not one. I am tossing two coins. What is the probability? Probability is there can be both of them head, both of them tails, one of them head and another tail. Which one head and which one tail? First coin head, second coin tail. First coin tail, second coin head. So then the outcome is a square plus 2ab
plus b square, a plus b whole square, 2 coins. ऐसे तो एक मीटिंग में अपन ज्योति का If there are 3 coins, बोल देगी कि अपने then it will be क्या-क्या a system plus चल b रहा है। whole cube. हाँ, If क्या it is एक दिन 4 coins, सेमिनार करवाएंगे then ऑनलाइन a आपका भी plus b कॉन्फ्रेंस raised to the power of आपको 4. बिठाएंगे और उसमें आपको सिर्फ बताना है कि So बोलना है what कि happens क्या-क्या is, होता है। as the number of coins increase, the probability distribution will be of that kind. The extreme will be very few and the middle portion will be having higher probability. This is the logic behind saying that random events are normally distributed. That is why we say representative sample has to be a random sample. If the sample is not random, then it is not representative. If representativeness is not there, then there is no generalizability of the hypothesis that we have tested. That is the reason why the hypothesis testing has to take into account. But what happens is, suppose the sample is not normal, what do I do? What will I do? If the sample is not random, suppose I have gone to a particular school and I requested them, please, I want to do this research, please give me permission. X school said, no, we cannot give you because, see, in our school, we have regular teaching. The researcher goes to Y school, asks them for permission. Suppose they have said, okay, you do your research. What type of sampling is this? What is the type of sampling? I want to do a study on 9th standard students and I went to school X. They said, no, we cannot give you permission. I went to school Y. They gave me the permission to do my experiment. What type of sampling is this? अटेंडेंस और फीडबैक की सेशन का भी तो भेजोगे। Which type? Judgmental? तो कब भेजना है पूछ रहे हैं। No. Definitely it is not random. Definitely this sampling method is not random. Convenience. Yeah. Convenience sampling. Very good. Kamal Singh sir. Very right. Convenience sampling, even though I may say that it is cluster sampling. Cluster sampling. Because I have taken entire 9th standard students as a cluster. So when my sampling is not random, what are my choices of testing the hypothesis? How can I test my hypothesis? I cannot use certain statistics. Earlier somebody said, about t-test. I cannot use t-test because t-test has a assumption of normality. If I cannot use t-test, what test can I use? Which other test can I use? If I am not able to use t-test, then which other test can I use? It has to be a non-parametric test. Which one? Have you heard about I think somebody is answering. No? Kolmogorov, Smirnov. F test कर सकते हैं. Z test हो सकता है. Z test can be, but then Z test also requires a normal distribution. F test. F also is normal. It also requires normal distribution. T test, F test, Z test, they all require normal distribution. The distribution has to be normal. Poisson test, Kolmogorov, Smirnov, because I want to see the difference. T test establishes difference between mean 1 and mean 2. Whether mean 1 and mean 2 are significantly different or not.
at a particular level, 0.05 or 0.01 level. 0.05 means I am ready to accept 5% error. 0.01 means I am ready to accept 1% error. So Kolmogorov-Smirnov test, Krustal-Wallis test, they are all non-parametric alternatives. In fact, you are having the session on quantitative research. Maybe there some more ideas will be given to you there. Okay, as I told, I have reached 5 o'clock. In fact, I have wanted to discuss with you a few more things, and my presentation I could not use. I'm sorry, but I will share the presentation with the organizers, and you can have a look at that. I'll be sending it to the organizers, and I'll request them if they can share that with you. It should be okay. Thank you very much. In fact, I'm really sorry for the initial hiccups that we had. I also was really disturbed. In fact, I was not in my normal self. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Participants, if you have any query, please raise your hand. Anything you want to ask? Any question? You are welcome. Any question? No question means only two things. One, either you have completely understood what I said, or the alternative I don't want to say. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. अब मैं सर आपके वैल्यूबल नॉलेज के लिए बहुत थैंक यू, एंड मैं आप इनवाइट कर रही हूँ हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा नालवे को कि वो आपका आभार व्यक्त करें. In fact, we have been only corresponding. Varsha madam and me have been corresponding on the email. I have not seen. I can see her now. Namaste madam. नमस्ते सर. थैंक यू दीप्ति. सर हमारे बीच में उपस्थित हुए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे बीच में सर आए और हाइपोथेसिस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन एनालिसिस, और बहुत सारे आपने इतने सारे क्राइटेरियाज को एक साथ ले लिया सर इतने कम समय में. और आप प्लीज सॉरी मत बोलिए सर, आप हमारे बीच में हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है. कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे और वो सर कोई मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पे बोलना था, जो स्पीच थी आपकी, थोड़ा हम लोगों को जो आपने गाइड किया है हमारे लिए वो बहुत वैल्यूएबल है. सो थैंक यू सो मच सर. और हम फिर से कोशिश करेंगे कभी नेक्स्ट एफडीपी में कि आपको फिर से हम यहाँ इनवाइट करें और आपसे एक बार फिर से हम लोग कुछ गाइडेंस ले सकें. सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला. सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन सोसाइटी, सेंट्रल एकेडमी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और एमडीएस यूनिवर्सिटी के साथ में हम सभी आपका थैंक यू सो मच करते हैं. थैंक्स सर. ऑन करो माइक ऑन करके बोलो. पार्टिसिपेंट्स, अटेंडेंस लिंक प्रोवाइड किया जा चुका है चैट बॉक्स में. अपना अटेंडेंस फिल करें. कितने देर तक अटेंडेंस शीट वैलिड होगा? रात तक. कल हमारा थर्ड डे है. 10-20 सेशन वैलिडिटी डालो, फिर बंद कर देना. 2:30 स्टार्ट होगा. पार्टिसिपेंट्स 10 मिनट पहले जुड़ने की कोशिश कीजिए एंड फिल योर अटेंडेंस. कल का टाइम बता दो. सेम लिंक या नया लिंक देंगे? कल नया लिंक दे देंगे. मैम फीडबैक फोरम की अटेंडेंस है कोई अलग से? यस सर. सॉरी रवि सर, आपकी आवाज समझ में नहीं आई. एक बार फीडबैक फोरम या अटेंडेंस फोरम है क्या, या अलग से है? जी सर, ये सेम है. अटेंडेंस विद फीडबैक. मैम इसमें रिसर्च स्कॉलर का ऑप्शन नहीं आ रहा. असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यही आ रहा है. ओके सॉरी सर. वी विल प्रोवाइड यू. अभी आप अभी तो कर दिया मैम असिस्टेंट प्रोफेसर से, बट प्लीज आप कल वाले में वो करना. बिल्कुल ये करेक्ट कर दिया जाएगा. बाय मिस्टेकन रह गया.